Assalamualaikum dear students, subject environment, class 3rd, getting to know the place we live in. Today I am going to teach you about World Heritage Day. Okay, so let's start the video. World Heritage Day, 18 April is World Heritage Day. Heritage means विरसा, जो हमें किससे मिलता है, हमारे जो हिस्ट्री में जो पीपल थे, जो उन्होंने जो भी विरसा रखा है उसे हम क्या कहते हैं, हेरिटेज. ओके, बिल्डिंग्स, मोनूमेंट्स, ये सभी क्या है, हेरिटेज है. ओके, ऑन दिस डे पे विजिट टू अ फोर्ट और नेशनल मोनूमेंट, लर्न अबाउट इट इम्पोर्टेंस. ओके, collect information about the rules for protecting World Heritage Sites. क्या करना है आपको, इंफॉर्मेशन क्या करना है, कलेक्ट करना है. प्रोटेक्टिंग रूल्स, प्रोटेक्टिंग रूल्स, जितने प्रोटेक्टिंग रूल्स बनाए गए हैं वर्ल्ड हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. ओके, सो obtain pictures of historical buildings, monuments and wards in your surrounding, listing them in frame. आपके सराउंडिंग में जितनी भी मोनूमेंट्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, आपको क्या करना है, उसकी इमेज इस फ्रेम में स्टिक करनी है. ओके, इन अकोला 1/4 is present. Just a place become renowned because of fort or historical building. It also gained renown because of its people and their good deeds. Collect information about soldiers, writers, artists, etc. in your neighborhood. Invite them to your school and interview them. Okay. Next, do you know, क्या आप जानते हैं, संत गाडगे बाबा महाराज रियल नेम was विभूजी जिंगराजी जानोरकर. He belonged to Shingaon in Daryapur तालुका of Amravati district. Okay, संत गाडगे बाबा राय सोशल अवेयरनेस थ्रू कीर्तन. सोशल अवेयरनेस को क्या किया, उन्होंने कराया. During his kirtan, he would ask people questions and answer them himself. Why are our people poor? Because they do not have education. He appealed to the people to get educated. He is known as one of the great saints of the 20th century. His village will forever be remembered for his work in the service of people. Okay. Next, try this. Visit a weekly market and meet a shopkeeper there. Interview him with the help of the following question. क्या करना है आपको, वीकली मार्केट में विजिट करना है और शॉपकीपर का क्या लेना है, इंटरव्यू लेना है. ओके, first you look the village, weekly market and some means of transport, bus, truck, placard. Okay, so first question is, how many years have you been in this occupation? आप कितने सालों से ऑक्यूपेशन कर रहे हैं. Which item do you
सेल इन योर शॉप? आप आपकी शॉप में कौन से आइटम्स सेल करते हैं? वेयर डू यू गेट दिस आइटम्स फ्रॉम? आप ये आइटम्स कहाँ से लाते हैं? वॉट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज टू कैरी द गुड्स? और ये सामान को, माल को लाने के लिए आप कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं? ओके, ये क्या करना है आपको? इंटरव्यू देना है. सो try this activity. People in villages are dependent on weekly markets. जो विलेज पीपल होते हैं उनके यहाँ पे रेगुलर मार्केट नहीं होता. मार्केट क्या होता है? वीकली, वन डे होता है ओनली, वीक में एक बार होता है. ठीक है. For their daily needs, this market sell all essential items, mainly food grains, vegetables, farming implements, clothes, etc. become available here. The market is also the place where people can meet one another and inquire about each other's well-being. Next, do you know there are different type of markets? Yes or no? Yes. For example, fruit market, flower market, as well as animal market. To buy and sell animals such as donkey and horses. Jejuri in Pune district. Where? Jejuri in Pune district and Madi in Ahmednagar district are known for their donkey market. Okay. Malegaon in Nanded district also known for its horse and donkey market. Places become famous due to reasons such as this. Okay. Next, try this. Find the name of person, places, relation, animal and vegetable hidden in the puzzle along sides. Puzzle में आपको सब animals के, vegetables, relation, person, places क्या दिए हुए हैं? नेम दिए हैं. वो आपको क्या करना है? सर्च करना है. So first search the person name. Anand, Devika, Deepak. Okay. Place name. Now search the place name. Nanded, UAE. Relation name. Now search the relation name. Sister, niece. Now search the animal name. Sheep. Sheep. Okay. Now search the vegetable name. Spinach. Okay. So draw the line in your puzzle box. Okay. Next, what we have learned in this chapter? Many settlements merge together and form a village. बहुत सारी सेटलमेंट एक साथ मर्ज होती है, टुगेदर क्या फॉर्म होता है? विलेज. एंड विलेज मर्ज होने के बाद टाउन, इस तरह से स्टेट फॉर्म्स होती है. ओके. एज फार्मिंग डेवलप्ड
people had to different kinds of work. Some places become known for their historical buildings. Yes or no? Yes. A place gets its renown from its people and their important dates. Essential items are available in a market. Okay. Next is your homework. Read the lesson and write 30 difficult words from the lesson. Thank you.